water in which mole fraction of ethanol is this much. So अब तो हो जाएगा ना, अगर आप सोल्यूशन की डेंसिटी को 1 मान लेंगे तो। बस सर वो पे तो हो जाएगा, कर चुका हूँ मैं solution। वैसे ही लेकिन किया ना उसमें आपने? वैसे ही करा है, बस उसमें जो मैंने करा था उसमें गिवन था दोनों का, इसमें एक का गिवन। दोनों का गिवन था मतलब सोल्यूशन की डेंसिटी गिवन थी, इसमें वाटर की डेंसिटी है बस। वाटर की डेंसिटी नहीं है ये, ठीक है ना, वो वहां पे टाइपो है। अब बताइए, वाटर की डेंसिटी को अज्यूम करना पड़ेगा क्या? 1 1 तो मतलब वो तो होता ही है ना, 1 ग्राम/ml, दिस इज अ फैक्ट, इट इज नॉट एन अजम्पशन, करेक्ट? यस। ओके, सो यहाँ पे एक टाइपो है इनका, अज्यूम द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन टू बी 1 लिखना था इनको, इन्होंने वाटर टू बी 1 लिखा। आपने क्या करके मतलब यू हैव डन दिस क्वेश्चन और यू डिड नॉट डू दिस क्वेश्चन? आई डिड, बट थोड़ा बट मैंने करा लेकिन थोड़ा अजीब सा करा क्योंकि समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। अच्छा, समझ नहीं आया क्या करूं, ठीक है। लाइक इफ यू हैव, आई मीन यू शुड आस्क दीज थिंग्स टू द टीचर जो भी वहां पे है, कि सर हाउ विल बी कैलकुलेट इफ वी डोंट नो द डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ सॉरी डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, दैट इज द इथेनॉल सोल्यूशन। ओके, ओके, 1 मार्क तो ठीक मिल जाएगा इसमें, 3 में से मिल जाना चाहिए। 1 मार्क, लेकिन चलिए ठीक है, ये सब चीज़ का थोड़ा ख्याल रखिएगा, ठीक है, इस तरह के सवाल रहते हैं जनरली। ओके, सो इन द लास्ट लेक्चर व्हाट डिड वी सी? वी सॉ दैट atomic radius, right? So in atomic radius, we did 3 things: covalent and metallic and van der Waal. And then we also saw the trend in the periodic table. And then in the group and in the period, we saw the trend. And then we also wrote an anomaly that nitrogen and oxygen, we were expecting that the size of oxygen should be larger, but the size of oxygen is not larger than nitrogen because of electronic repulsion. And this is the first electronic repulsion that we have here. Okay. Now this atomic radius is done. So please, we will move on now. Let us do one question actually. I think उससे पहले I think we have to do some more things. For example, ionic radius and all. So how many types of ions are there? What do you guys think? I think you have learned about ions previously. How many types of ions are there? How many types of ions are there, guys? 2 types. 2 types. What are those 2 types? Sorry? Cations and Cations and anions. anions, right? Cations and anions. Okay, what happens in cations? What happens in cation? How can we form cation? Right. When we lose one shell. Sorry, can you please? When we lose one electron. Okay, fine. Your voice does not come very clearly, Fatima. It has a lot of, like, maybe it's mumbleness or something. You are saying something about electron, right? I was saying when it loses one electron. When it loses 1 electron, okay, fine. When it loses 1 electron. Write a question, arrange the following in increasing order. Of size. Carbon, nitrogen, oxygen, and fluorine. Strontium, beryllium, magnesium, calcium, strontium. Phosphorus, sulfur, chlorine, and argon.
Send the answers on my WhatsApp, okay? Send the answers when you're done, okay? सर इस क्वेश्चन में क्या करना है? What is given? Tell me. Arrange the following in increasing order of size, right? Arey, who asked? Aisha, you asked the question, right? Yes. तो देखिए, आपको ये बताना है कि किसका साइज बड़ा होगा इसमें, बताइए। कार्बन का सबसे बड़ा होगा, फिर नाइट्रोजन का होगा, फिर ऑक्सीजन का होगा, फिर क्लोरीन का होगा। ऐसे करके कुछ लिखना है आपको, वो इस तरह से लिखना है, ठीक है? गॉट इट? आयशा, पता कैसे चलेगा किसका साइज बड़ा है? ओह, आप लास्ट क्लास में थे नहीं? थी। तो फिर क्या पढ़ाया था हमने? रिवाइज नहीं किया आपने यानी? How many of you are just stuck? Tell me now. Like they don't know what to do. Like Aisha, raise your hand if you don't know just at all. Sir, me. Fatima. Sorry, Sir, Fatima. I've sent. You have sent. Where did you send it, Devangi? Sir, on WhatsApp. On WhatsApp. I did not receive. किसको भेज दिया आपने? अच्छा, अब आया, अब आया। Okay. Fatima. Okay, you also don't. Okay, what about others? Okay, fine. Can you tell me all of these elements? These are of which? Are they? Do they have same period or same group? They lie on the same period or the same group? Tell me these elements. Aisha and Fatima. What is common between them? Group and period के हिसाब से बताएं. They are in the same group. Yes. Which group? Which group elements are these? Aisha, you also tell. Yes, Fatima, tell me. Fatima. Sir, 1 second. 1 second. Okay. फहद, आप भेजिएगा आंसर. पीरियड 2। नहीं, आप आंसर भेज दीजिए ना. आपको तो आ रहा होगा ना. अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज. आप आंसर भेजिए. ऑल्सो देवांगी द फर्स्ट. हाँ, फहद टेल मी. कुछ नहीं, बाद में अभी। अच्छा अच्छा. देवांगी द फर्स्ट वन, उसमें कुछ गलत है. आप देखिए क्या गलत है.
Aisha, what about you? You don't know? All of these lie in which period or which group? Sir, they lie in the same period, second period. They lie in the same. Aisha, can you see that? Yes or no? Yes, sir. You can see that? पक्की बात? Yes. ठीक है. अब आप इनके बारे में बताइए. All of these, what do they have in common? They are in the same group or same period? Aisha will tell me the answer. Same period. Which period, Aisha? 2. Period, pakka. So periods are vertical or horizontal? Sorry, group. They are all in the same group. Okay, fine. And we have discussed how the atomic sizes changes when we go from left to right in a period and top to bottom in a group. Yes or no, Aisha? Yes. So can you arrange them in an order like this, like left to right? आप arrange कीजिए उनको. All of these things, if they are in the same period, if they are in the same group, then you have to arrange them in top to down, right? And then you can comment about the atomic size. Correct? Yes or no? Yes, sir. Yeah. आया? ठीक है. Sir, I've tried to solve it. Can you check it? I'm checking that actually. I mean, you have applied the concept correctly, but we learned something in the last lecture. And please see, okay, just look at the last lecture, read everything. At the last part, we did this, na? Atomic sizes. So read those part. Once we are done with the covalent, metallic, and van der Waal, we discussed about the trend. So after the trend, please start reading, okay? You will see something and then you will correct the first question, this question, A1. This A, Yes. you should correct something. Did you see that, Fatima? Yeah. Yeah, please correct it and tell me. And for the next one, this is SR actually. This is SR. You have written SC for the second one. You have to change that to SR. And I think that is fine. No, for the C1, for the first one also, you have to change the answer, I think so. In increasing order. So you are saying that fluorine has the largest size, right? Yes, Fatima? Sir, which one? For the first one, Sir, fluorine has the Sir, sorry? in the A1? Yeah, A1. Sir, I said the fluorine, yeah, it has the biggest size, and then carbon has this one. No. Read again. Read whatever trend we have said. What is the trend? Devangi, did you find anything wrong in how you have answered the first question? Yes, Devangi? Sir, I'm unable to find it. No. Okay, fine. Yes, Fahad, tell me. Sir, in the last class, we wrote that oxygen has a. correct. बस. नहीं मुझे पूछना है कुछ उसमें. हाँ, पूछना है कुछ, बताइए. कि there's a slight increase in atomic radius from nitrogen to oxygen. Yeah. But कल मैंने फिर चेक करा था गूगल पे, तो नहीं बता रहा था ऐसा एटॉमिक रेडियस. क्या एटॉमिक रेडियस नहीं बता रहा था? मतलब उसका चार्ट जो बन रहा था वो चार्ज चार्ट साइज का चार्ट. अच्छा. It was like it just kept decreasing at every point. ऑक्सीजन पे मतलब कम हो रहा था. नहीं कम होगा ऑक्सीजन का. एटॉमिक रेडियस ऑफ ऑक्सीजन 60, नाइट्रोजन second. Okay, so atomic radius of oxygen is 67 picometer and nitrogen is 56 picometer. फिर यहाँ पे दिखा रहा है नाइट्रोजन 75 pm and oxygen 73 pm. So it is actually like various methods, no, of determining that. Like एक तो
फर्स्ट दैट इज फाइन, दैट कोवेलेंट आप बॉन्ड देखते हैं उसके हिसाब से आप चेक करते हो, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन में जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है दैट हैज अ ट्रिपल बॉन्ड, राइट, एंड ऑक्सीजन में वी हैव डबल बॉन्ड, करेक्ट। यस। सो उसके बाद भी ना कुछ आई मीन इट डिफर्स व्हेन यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ measuring instruments, okay, तो बस उसी का डिफरेंस है, लेकिन इट इज गोइंग टू इंक्रीज इफ आई गो फ्रॉम नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन, ठीक है। आप एनसीईआरटी के, आपको सवाल आएगा किसका, एनसीईआरटी का आएगा, जी। है कि नहीं? एनसीईआरटी में क्या हो रहा है? एनसीईआरटी में आई डोंट थिंक कुछ लिखा है इसके बारे में। व्हाट इज द नाइट्रोजन का कितना उसमें? नाइट्रोजन atomic radius is decreasing from nitrogen to oxygen. इट इज डिक्रीजिंग, एनसीईआरटी में डिक्रीजिंग ही लिखा हुआ है। जी। नहीं नहीं, इंक्रीज करता है, लेकिन ठीक है। आई थिंक मे बी दिस इज सम डेटा का कुछ खेल होगा, वेट अ सेकंड। यहाँ पे एक और पिक्चर है, उसमें कार्बन हैज larger radius than boron and oxygen has larger radius than nitrogen. एक और पिक्चर है, मतलब गूगल पे। हाँ, दोस थिंग विल बी देयर, वेट अ सेकंड, हम बताते हैं आपको। जो सामने सवाल लिखा था ना, दैट वाज, वेट अ सेकंड, फ्रॉम इट्स सिंपलर एक्चुअली। आप इसको कीजिए, इसका आंसर भेजिए। इट इज ग्रेटर, ठीक है ना। इफ दे विल आस्क यू क्वेश्चन, दे विल आस्क यू क्वेश्चन अबाउट द ग्रेटर साइज एंड देन यू हैव टू आंसर इन दैट वे। Sir, please tell what's the mistake in first part. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में ना, वी हैव डन yesterday, like oxygen will have, oh sorry, I think you wrote it correctly. नहीं नहीं, आपने सही लिखा है, sorry, not you, देवांगी, you have written it correctly, my bad. Wait a second. Carbon then nitrogen. Okay. Sir, I sent it again. Okay, I've sent it once again. Now I think it is fine. Okay, so if you have this one, then for this case it is going to be the smallest size will be for fluorine, and after fluorine we will have nitrogen, then we'll have oxygen, and then we'll have the largest size will be for carbon. Here it is going to be beryllium having the smallest size, followed by Mg, followed by calcium, and then followed by strontium. And for this one, we will have the smallest size for chlorine, then for sulfur, then for phosphorus, and then the largest would be for argon. Argon is largest because we have seen that it is due to the van der Waal radius.
Then we have ionic radius directly here. Okay. So now for see, देखिए जब आपके पास सवाल ये आएगा, like if you will get this question ना, if I compare nitrogen and oxygen, then why is oxygen having smaller radius? Then you are going to answer according to what? You're going to answer according to the 2p4 one, electronic repulsion. Okay. But अगर उसके बाद फिर सवाल उसके बाद आपके कुछ और आ ही नहीं सकता इसके अलावा, ठीक है? They are not going to, if they will ask you about nitrogen, they are not going to ask why is nitrogen having larger radius than oxygen. That is not a question. Okay. If they will ask you a question, then they will ask you a question in this manner, that nitrogen and oxygen, why is oxygen having a larger radius? Okay. So उसका आंसर क्या है? 2p4 के वजह से. Okay. Now write about ions. Right? Ionic radius. For ions, we have two categories. There are cation. These are positively charged. And there are anions. These are negatively charged. Okay. Now in cations, we have A. If A loses electron, then what we will be getting from A, there is an electron which is getting out. Right. So A is losing an electron. A has become A positive, and there is an electron outside A. Okay. So there's a loss of electron. And if I talk about size, now once we have removed an electron, there will be protons, and proton will have more effective nuclear charge on the remaining electrons. Okay. And that is why the parent carbon atom, it will have larger size than the cation. So cation will have smaller size. As we go from neutral to cation, the size is going to decrease because the number of proton is not changing. Okay. So the attraction that we have, that is same. But the last electron, it is getting removed. If the last electron is getting removed, then the other electrons will face the attraction more efficiently. If I look at anions here, then what is going to happen? We'll have A, and we will add an electron to A, and A will become A negative. That means there is a gain of electron. Now, once there is a gain of electron, now the proton, which is still the same, proton is same, and now we have more number of electrons than the proton. So proton, it cannot reach to the last electron that we have added as efficiently as it was attracting the previous electron. So that is why the size here, if I talk about the parent atom A, it will have smaller size than the anion. So in anion, what is going to happen? The general case is cation is the smallest, followed by neutral, and then followed by anion. You can understand this by two cases that I'm going to write. For example, we have sodium. Okay, this is sodium. And then the first orbital, the first orbit, then we have the second orbit, right? And then we also have one more orbit, right? The last orbit, third orbit. Okay, so now we have here electrons. The last electron is here. Here we have two electrons. Here we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 electrons. And here we have one electron. If I'm going to remove one electron, then what is going to happen? Everything will be same except this last shell. So this is a very extreme example on how the size is going to change. So this is what? Now this is Na positive. This is Na positive, and this was only sodium. Now you can see that Na has larger size than Na positive. Na positive has smaller size. Can all of you see that? Yes or no? Please tell me. Yes or no, guys? That cation is going to have. Sorry, I have written wrongly.
cation is going to have smaller size than the parent atom. Yes, sir. Yes. What about others, guys? Please tell me. Aisha, Fatima. Sir, can you scroll up a bit? Yeah, I will scroll up. But did you understand this? Yes or no? Tell me. Yeah. Anion is going to have the largest size, then the neutral, and then the smallest will be cation. Done everyone? Yes or no? Please tell me. Done, sir. क्या बात है आयशा एंड फहद, आप लोग का होता तो आप हाँ ना नहीं बोल सकते हैं. आयशा, फहद, फातिमा, अब्दुल्ला. Yes, Aisha. Aisha. Oh, Aisha is not here. What about you, Fahad? Yes, sir. आपका हो गया था? Yes or no, Aisha? Yes, sir. I asked you. I asked ना. Right here. Factors affecting size of ions. A part, charge. You will write here. Size of ion is inversely proportional to cationic charge. And size of ion is directly proportional to anionic charge.
Keeping this in mind, we'll answer this. Arrange the following. Arrange the following in increasing order. Increasing order of size. Achha, by the way, I have not written here. I've just written this charge point, but I hope you will understand that when we go from left to right, B भी लिख लीजिए भाई आप लोग. For example, if I'm talking about atomic size. Okay, so size of ion is directly proportional to atomic size. Okay, for the neutral atom. Okay, so the trend is going to be same. For trend, you can write ionic size decreases from left to right in a period. Next, you are going to write ionic size increases from top to bottom in a group. Okay. Now write, arrange the following in increasing order of size. Sir, can you scroll up a bit? See, are you guys doing, yes or no? Tell me. Yes, sir. Yes, sir.
So should I send it? Yeah, please send it. Send the answers when you're done. Sir, I've sent. Okay, let me see. Okay, Devangi also, Aisha also has sent. In aluminium and magnesium, please rethink about it, Devangi. Okay, sir. So I've sent it. I'm just looking. Aisha, yours is not correct. I will tell you what to do. First one is fine, Fatima. For the second one, yeah, correct. Second one is also fine. Aisha, first one is fine. Second one may see the cation will always have a smaller size than the neutral atoms. Okay. So for the first one, we'll have I positive, the smallest, followed by the neutral I, and then followed by largest will be I negative. Here in this case, what you have to do, which is having the highest cationic charge, you will put that first. You will have Al3 plus, followed by Mg2 plus. Now, in between magnesium and aluminium, what you are going to see, we are going to see from left to right in a period, the size is going to get smaller. So we'll have aluminium and then we have the largest size of magnesium because magnesium is towards left, not towards right. Okay, so we have magnesium and then we have aluminium. In this way, when we are going, the size is going to decrease. We understood this, yes or no? Aisha, tell me. Yes. Yes. Sir, right. so mine was right. Yours is right only, no? I said right, no? I said wrong. Sir, you said to rethink about the second one, I think. नहीं आपका सही है, सॉरी. हमने आपका Okay, तो sir. कुछ और आंसर देख लिया था. ठीक है आपका. Now, right, isoelectronic species. What are isoelectronic species? Please write. Ions of different species. Ions of different elements which have same number of electron, but different atomic number. Are called isoelectronic species. Are called isoelectronic species. Okay. For example, if you look at lithium. So lithium has how many electrons? Tell me. Neutral lithium, it has how many electrons? 3. 3. What about beryllium? Fatima, you will not answer. Beryllium has how many electrons? 4. 4 electrons, correct. If I will have lithium positive, Aisha, lithium positive will have how many electrons? 3. Very good. And beryllium 2 positive will have how many electrons? 2 positive. We have removed 2 electrons. So how many electrons will be there? 2 electrons, right? Very good. So now lithium positive and beryllium 2 positive, these are what? These are isoelectronic species. These are isoelectronic species. Got it? Yes or no? Please tell me.
Now you are going to write a question. Which of the following are isoelectronic? That means they should have same number of electrons. Okay. Right here, first one. O2 negative. Two negatives, that means you have added 2 electrons. Second, Cl negative. Third, Mg2 positive. Fourth, calcium 2 positive. Right for the fifth one also. Fifth will be sodium. Sixth, Al3 positive. Seventh, iron. Eighth is fluorine. And ninth is sulfur 2 negative. Okay, I'm doing a few for oxygen. For O2 negative, oxygen has neutral atom has 8 electrons. Now we have added how many electrons? 2 electrons. So plus 2, it is going to be 10. Okay, so the neutral atom, it has 8 plus 2, it is equal to 10. Similarly, if I talk about magnesium, magnesium has 12 electrons. Minus 2, because I have removed 2 electrons, minus 2, it is going to give me 10. This is how you are going to calculate. Okay, so calculate for others also and tell, like you have to calculate the number of electrons in all of the cases and tell which of the following are isoelectronic. Devangi, you got disconnected. You know what to do now in this question, Devangi? Yes, sir. Okay.
So I Yeah, tell me. Okay. You have sent me the answer. I think those are fine. Seems fine. Plus 2, 18. Yeah, I think that is correct, Fatima. Okay, Aisha. Okay, 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 okay. 6. Okay. And okay. Yeah, 14 fine. ठीक है. Aisha, can you recheck for 6th one aluminium? Can you recheck for aluminium? It is 3 positive. Yeah, I think that is fine. What about Abdullah and Fahad? Send the answers, please. Yes, Abdullah, am I audible? Yes, sir. Yeah, send the answers. Fahad and Abdullah, can you please send the Abdullah, you're doing now? Yeah, you are not doing. Please send the answers, guys. इतना time नहीं लगा चाहिए. Fahad, what about you? Fahad, are you there? No. Okay. Okay, Fahad. Okay. See, I'm waiting for you guys very patiently because these things are important and these are going to help you till 12th standard. Okay. Otherwise, it doesn't make sense to wait so much long. No? Abdullah, are you there? Yes, Muhammad Abdullah. Yes, sir. Yes, sir. Sending. Sending. जल्दी भेजिए.
No, Abdullah. Wrong. Some of them are wrong. Some of them are fine. Can you turn your mic on, Abdullah? Yes, sir. Chlorine. What is the atomic number of chlorine? What is the atomic number of chlorine? Yeah, tell me. 20, sir. 20. 1920. याद कीजिए ऐसे काम नहीं चलेगा. What is the atomic number of chlorine, guys? Atomic number of 17. chlorine? 17. And Abdullah, tell me, what are we doing here? We are adding electron or removing electron? In Cl negative. Removing electron. ध्यान नहीं है अब्दुल्ला आपका. चुपचाप बैठ के बस आप क्या कर रहे होते हैं? When we are having A negative, then what is there? Gain of electron या loss of electron? Loss of electron. Loss of electron. आपको यहाँ पे ये भी नहीं दिख रहा है. कहाँ ध्यान है आपका? अरे A से जब A negative जा रहा है, when we are going from neutral to anion, then what is happening in anion? Gain of electron, loss of electron. Loss. Sorry, what? Can you speak correctly, मोहम्मद अब्दुल्ला? जोर से Yes. बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? एनायन में क्या होता है? लॉस. Gain. 10 बार आप लॉस बोल रहे हैं. ध्यान क्या है आपका? लिखी हुई चीज तो सही से पढ़िए. Now, if how many electrons is it gaining? How many electron is it gaining? 2. एकदम ध्यान नहीं है, बिल्कुल ध्यान नहीं. क्यों 2? Two plus ion. क्या? 2? What? Sorry, can you repeat that, please? ठीक है, कोई बात नहीं. आपको नहीं आया ये तो आप पहले हमें बताते. चुपचाप बैठे रहने से कुछ नहीं होगा. ठीक है अब्दुल्ला? ना इधर आंसर हाँ ना भी नहीं बोलते हैं आप. कुछ सवाल पूछने से उनका भी जवाब नहीं देते. नाम लेना पड़ता है आपका. See here. I am taking an example of fluorine because it has less number of electron. Whose example I am taking? Tell me. Yes, cons fluorine. How many? What is the atomic number of fluorine? What is the atomic number of fluorine? 17. फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है. अरे भाई मेरे, जब यहाँ पे क्लोरीन का 17 होगा तो फ्लोरीन का 17 कैसे होगा? What is my voice not clear, Abdullah? Yes, it's clear. It's clear. What is the atomic number of fluorine? There can be 2 answers only. Either you will give a right answer or a wrong answer, or you will give no answer. Sir, I don't. What is your answer? What is the atomic number of fluorine? 34. You think 4. You don't know. Okay, fine. You have NCERT textbook? Yes or no? Tell me. No. You don't have NCERT textbook. Why? Which school do you go to, Abdullah? IPS. So there they don't need, they don't give you NCERT textbooks. देखिए. Sorry? What? They did not give you. What did you say? क्या बोला है उन्होंने? किसी को सुनाई दिया? फहद, what did he say? फहद तो नहीं है क्लास में. Abdullah, please get NCERT textbook. Okay. 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 Where is your school? In which country? Saudi Arabia. Saudi Arabia. Do you get books there? No. No. So how will you get the book? Print out. Print out. Okay. So school does not provide. It provides. तो फिर आपने नहीं लिया वहां से लेट एडमिशन? Yes. अब खत्म हो गया. आप मंगवा भी नहीं सकते क्या? आप उनको बोलिए, वो मंगवा देंगे आपके लिए एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक. उनके पास हो भी सकता है, हो ना? Yes, sir. इंडिया से कोई अगर आ रहा है तो इंडिया से मंगवा लीजिए आप.
ठीक है, बट यू शुड हैव दी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। आपके पास गूगल है? यस। आप ढूंढिए फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर, बताइए कितना होता है। बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर इज द मोस्ट बेसिक थिंग दैट यू हैव टू नो। टेल मी, सर्च करके और बताइए खुद से एटॉमिक नंबर कितना है। सर 17 35 35 फ्लोरीन, फ्लोरीन का, फ्लोरीन का फ्लोरीन है सर, फ्लोरीन सर। कितना है इसका? व्हाट इज 9 एटॉमिक नंबर? 9, correct. Atomic number is 9. So how many electron will it have? Fluorine will have how many electron and how many proton? Tell me. 4 electrons and 5 protons. नहीं, आप प्लीज पुराने चैप्टर्स को पढ़िए, ठीक है। अब्दुल्ला, आपने अभी तक लेक्चर देखा है कोई भी एटॉमिक स्ट्रक्चर का? नहीं सर। नहीं देखा आपने, ठीक है। फ्लोरीन, आप ये बताइए ऐसे देखने में क्या लग रहा है आपको, न्यूट्रल या फिर यहाँ पे कोई चार्ज, यहाँ पे कोई चार्ज नजर आ रहा है नहीं सर। फ्लोरीन में? तो ये न्यूट्रल होगा, ठीक है। ठीक है, जो एटॉमिक नंबर होता है, द एटॉमिक नंबर, इट टेल्स यू अबाउट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसके बारे में बताता है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। अब बताइए फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना बताया था आपने? 9। 9. What will be its proton number? How many protons will it have? It will have how many protons? 18। अरे अभी हमने ये लिखा, इक्वालिटी आपको समझ में नहीं आ रही है मोहम्मद अब्दुल्ला, हमने कुछ एडवांस सवाल तो नहीं पूछ दिया यहाँ पे। What I am saying here, can you read this? ध्यान दीजिए प्लीज, ठीक है ना। हम बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे, लेकिन जो चीज लिखी हुई है उसको हम, आपको कम से कम जो चीज लिखी हुई है उसको पढ़ने आना चाहिए, ठीक है। उससे ज्यादा हम क्या करें? क्या लिखा हमने? Atomic number is equal to number of protons. What is the atomic number of fluorine? 9 sir. What will be the number of protons for fluorine? 17 sir. Sorry, I did not hear that. Sir 9। कुछ भारी था क्या ये मोहम्मद अब्दुल्ला? ठीक है, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। आई जस्ट नीड योर फोकस, नथिंग एल्स। पढ़ाने का काम है मेरा, हम पढ़ा देंगे, और सारी चीजें आसान है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। नाउ यू टेल मी, फ्लोरीन इज न्यूट्रल, दैट इज अनदर थिंग दैट वी हैव ऑलरेडी concluded, that fluorine is going to be neutral because it does not have any charge on it. Clear है अब्दुल्ला? yes or no? Tell me. Yes. ठीक है। अब एक बात बताइए आप, अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज हो, इसको आप न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने नेगेटिव चार्ज दीजिएगा? हाउ मेनी नेगेटिव चार्ज डू यू नीड इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज दिस पॉजिटिव चार्ज? 2। 2 नेगेटिव चार्ज? Yes sir. ठीक है, हमने एक नेगेटिव दिया, दूसरा नेगेटिव दे दिया। एक नेगेटिव तो एक पॉजिटिव से न्यूट्रलाइज हो गया, अब तो आपके पास चार्ज नेगेटिव 1 नेगेटिव हो गया ना, तो न्यूट्रल तो नहीं हुआ 1 नेगेटिव। समझ रहे हैं आप बात को? हाँ सर। क्या बोला हमने, बताइए क्या हुआ यहाँ पे? व्हेन वी हैव 1 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव, अगर हम इस पूरे ensemble को देखें, like if I am talking about this whole net thing, then what is the charge here? The total charge is going to be, this positive and negative are going to cancel each other, correct? And it will be negative. And it's going to be negative, right? So it will be, what will be the charge here? -1. Yes sir. Okay, now you tell me, once again I'm asking you, if I have 1 positive charge, how many negative charge do I need in order to neutralize it, in order to get the charge 0? +1 है, आप +1 है यहाँ, +x should be equal to 0.
x की वैल्यू क्या होगी? What will be the value of x? Sorry, कितना होगा? You did not get it. I'm asking you to solve a linear equation in one variable. If you have x plus 1 is equal to 0, what will be the value of x? 1 1 -1 1 या -1? -1 -1 होगा, ठीक है। अब बताइए हमने क्या किया यहाँ पे? had positive charge, that means -1 plus 1 will be equal to 0, Yes. right? So in order to neutralize one positive charge, how many negative charge do we need? 1 One negative charge, very good. One negative charge. In order to neutralize two positive charge, how many negative charge do I need? Tell me. 2 Two negative charge we need, ठीक है। अच्छा, the charge on proton is positive or negative? Do you know that? Yes or no? Tell me. आपको पता है प्रोटॉन में चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है? पॉजिटिव होता है। Proton is positive charge. Very good. How many proton does fluorine has? 9 protons. Yes. ठीक है, 9 protons हैं आपके पास जब। Now in order to neutralize this 9 proton, how many negative charge do you need? 9 9 negative charge. Then how many electrons will it have? How many electrons will it have? Fluorine will have how many electrons? 9 electrons in order to be neutral, ठीक है। तो neutral जब fluorine होगा, so it will have 9 electrons, and these 9 electrons will be situated like this. So I am writing the proton here. We have 9 positive charge. I'm just denoting this with 1 positive charge, but you will assume that this is 9 positive charge, okay? And this will be neutralized by 9 electrons, and these electrons are situated like this. Yes. Okay, I'm just making the shell diagram. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and then 1 9 electron. ठीक है? Yes. Okay. Now, what we are doing? We are going to add 1 electron. Now, when we are going to add another electron, you can see that the first shell is having 2 electrons. That is the maximum capacity. Second shell is having 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 electrons. So we can add an electron in this same shell here. Okay, so I'm just copying this and pasting here. When I will add 1 electron, I will get an electron here also. Okay, so this is my new electron, which I'm showing in green. Got it? Yes or no? Tell me. Yes, I got it. Okay, so here we have 9 protons plus 9 electron. That is giving me neutral. Count the number. So here also we have 9 protons. We are not changing the number of protons. Count how many electrons do we have? Count the round circles. How many electrons do we have? 9 9. फिर से काउंट कीजिए। 10 10 है ना? 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो बताइए यहाँ पे हमारे पास क्या ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, yes or no? हाँ सर, Right, so we have 9 and then we have, this is 9 positive charge and we have 10 negative charge. So what will be the total net charge? बताइए इसको सॉल्व करके क्या होगा नेट चार्ज? What will be the net charge? Solve this and tell me ना. Plus 9 minus कितना? -1 -1. आपको समझ में आया चार्ज क्यों अराइज होता है? हाँ ठीक है, अब आपसे अगर कोई पूछे यानी फ्लोरीन विल हैव दिस हियर, फ्लोरीन विल बी फ्लोरीन नेगेटिव। अब बताइए फ्लोरीन में क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है या फिर इलेक्ट्रॉन को निकाला गया है? इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। फिर आप वही बात कर रहे हैं, अभी हमने ऐड करके बताया यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया है, आपका ध्यान कहाँ है? आप लिख भी नहीं रहे हैं इसका मतलब। कैन यू शो मी योर नोट्स? सेंड द फोटोज अब्दुल्ला। आई डोंट थिंक सो दैट यू आर राइटिंग एनीथिंग। शो मी फास्ट। I didn't write Sorry? this one. No, I not didn't this write one.
No, not this one. This part. You have written this? Yes, sir, I wrote that. अभी आपने क्या कहा, फ्लोरीन नेगेटिव में से आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन डालने पे नेगेटिव हुआ है या फिर निकालने पे नेगेटिव हुआ है, क्या किया है हम लोगों ने? डालने पे। अब ये बताइए Al3 पॉजिटिव हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को निकाला है या डाला है? डाला। Did it- अरे इलेक्ट्रॉन Al3 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को निकाला है या डाला है? यस अब्दुल्ला वट, ठीक है, आप एक काम कीजिए, ये आपसे अभी नहीं होगा, आपका ध्यान नहीं है, यू विल रिमेंबर समथिंग. इफ पॉजिटिव चार्ज then electron is removed. If negative charge, then electron is added. Repeat this. What is the first point written? Positive charge, then electron is removed. If negative charge, electron is added. Say it once more. If positive charge, then electron is removed. If negative charge, then electron is added. What has happened here? Electron is removed or added? Removed, sir. Can you repeat that? I did not hear it. Electron is Added. removed or added? Added. Removed or added? Removed or added, Abdullah? Removed. Removed or added? Added. Removed or added? Removed. Okay. How many electrons are removed from Cu2 positive? 2. How many electrons are added in oxygen? 2. How many electrons are removed from Al? 3. Okay. Now you tell me here. Chlorine is 17. What we have done? Electron is removed or added? Added. How many electrons? 1. What is the atomic? Now, what is the number of electron now? 17 plus 1. 18. Atomic number of calcium. Do you know it? Yes or no? Atomic number for calcium? 20. Electron is removed or added? Removed. How many electrons is removed? 2. What will be the number of electrons now? 18. 18. Sodium. Electrons removed or added? Neutral. Neutral. Nothing has been done. So we have 11 electrons in sodium. Al3 plus removed or added? Removed. Removed. 13. How many has been removed? 3. How many electrons do we have? 10. Fluorine atomic number is 26. You have not done any. Sorry, iron's atomic number is 26. You have not done anything. It is neutral. Fluorine is, how much is 9. fluorine's atomic number? 9. Sulfur atomic number? 16. 16. What we have done? Electrons removed or added? Added. Okay. How many electrons? 2. It will be equal to 18. 18. Right. So we have this, and this as the isoelectronic species. Then we have this, and this as the isoelectronic species. Okay. Yes. आप पढ़ना चालू कीजिए, देखिए हम इतना टाइम हमेशा नहीं दे पाएंगे, ठीक है? Yes. इस तरह से अगर डेली चलता रहा तो फिर ठीक है, ध्यान दीजिए, नोट्स को लिखिए, रिवाइज करके आइए हमेशा. ऑल ऑफ यू राइट नेक्स्ट. आयोनाइजेशन एंथैल्पी. क्लास में सिर्फ आप ही नहीं है ना, इन सब बच्चों का यहाँ पे अभी ये सिर्फ सुन रहे थे. आयोनाइजेशन एंड स्टार्ट, you have the playlist now, you start watching the lectures, okay? Enthalpy. And also one more thing, Abdullah, now you are in 11th standard, things are not going to be given to you like ऐसे स्पून फीडिंग बोलते हैं ना, स्पून फीडिंग नहीं की जाएगी, ठीक है?
You have to ask for the spoon, you have to ask for the food also. For example, आप इतने दिन से आ रहे थे, अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिला था, आपको लेक्चर्स नहीं मिले थे प्रीवियस क्लासेस के, तो आपको मांगना पड़ेगा, ठीक है। आप हमसे मांगेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली हम आपको दे देंगे, या फिर कभी भी अगर हम भूल भी जाएंगे तो फिर आपको फिर से मांगना पड़ेगा, ठीक है। Okay, so same thing is with Learnivio. Are you registered in Learnivio app or website, Abdullah? Yes, sir. You are registered. Okay, fine. उसमें अगर कुछ दिक्कत होगी तो फिर आप Learnivio को बोलिएगा, असाइनमेंट अगर आपको नहीं मिल रहा होगा तो, ठीक है। तो इस यहाँ पे अब आपको बोलना पड़ेगा हमेशा। आपने एक शेर सुना है, शायरी सुनते हैं आप? Yes, sir. शायरी सुनते हैं, शायरी? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। सुनना चाहिए। देयर इज वन शेर, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी गालिब, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी गालिब, इस जहां में रहना है तो। आयशा, डू यू नो दिस शेर? Yes, sir. कैन यू कंप्लीट इट? इस जहां में रहना है तो। सर सुना है बट अच्छे से याद नहीं। याद नहीं, ओके। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी गालिब, इस जहां में रहना है तो कोहराम मचा दो। ओके, सो यू हैव टू स्पीक आउट इफ यू वांट टू लिव। ओके, दैट इज ओनली सर्वाइवल, यहाँ नहीं, हमेशा के लिए, ठीक है। और हम आपको बोलना सिखाएंगे, आप हमारे क्लास में चुप नहीं बैठ सकते। ओके, यू राइट हियर नाउ, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू। देवांगी, आपको समझ में आया शेर? डिड यू अंडरस्टैंड इट? Yes, sir, but I had not heard it before. So you have not heard it before. Okay, the energy required to remove the most loosely bound electron from an isolated gaseous atom of an element is called ionization enthalpy. Is known as ionization enthalpy. Okay, so write one more point. Most loosely bound electron is equal to, is what? It is the outermost electron. In valence shell. Okay, outermost electron in valence shell. That is ionization enthalpy. Okay, now let us look at a case. Let us say, for example, let us think about Fe, and we want to answer this question: which electron will be removed in Fe during ionization? And we have done this in our chapter atomic structure also. So Fe, if I look at, Fe has an atomic structure in which we have 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, and 3d6. Okay, so we have the electrons in 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, and 3d. So you have to tell me, you will tell me in the chat. Okay, let me give you some example. I will remove the electron from 1s or 2p or 4s or 3d. Tell the answer in chat, A, B, C, or D. Where should I remove the electron from? Yes, Fatima, correct. Yes, Aisha, correct. The outermost shell, valence shell. Devangi, once again, please look.
What is the outermost shell? Valence shell कौन सा है यहाँ पे? Valence shell maximum value of n, maximum value of the principal quantum number. I hope you want to change the answer now. But wait, नहीं पूरा आंसर दीजिए ना, like A, B, C और D ऑप्शन दे दिया देवांगी. Give me an answer. S कोई ऑप्शन नहीं है ना, S is not an option. आपने इस लिखा है ना यहाँ, S is not an option ना. हाँ, now you are correct. Abdullah, you please start watching the lectures of atomic structure, है ना? Because if you don't watch it, you will not understand here. Okay. Here, if we see the maximum value of n is the 4s. This is the outermost electron. These are the outermost electron. Okay, and this will be removed first. The 4s electron will be removed first. Okay. चलिए आज के लिए इतना ही. And now I will have to take the test. Right? You have a test on quantum numbers. Devangi, you have watched all the lectures of quantum numbers? Yes, Devangi. So there was only one lecture named quantum numbers. अरे तो टॉपिक खत्म होगा तब ना, क्वांटम नंबर्स तो बस आपने एक ही देखा यानी. हाँ सर एक क्वांटम नंबर्स वाला और उसके सेकंड वाले का हाफ देखा है. देखिए क्वांटम नंबर्स जो है ना, जो टॉपिक बोलते हैं क्वांटम नंबर्स, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग टिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. क्वांटम नंबर्स में सब कुछ आता है. ओके ओके सर. अब दीजिए टेस्ट, देखिए कितना आप स्कोर कर पाती हैं. ठीक है. इट इज एवरीथिंग रिलेटेड टू. Is it visible enough? Yes or no, tell me. यस सर. Yes. Okay. Please start writing. 3 plus 2, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay. Also, one more thing, if you need any help or if you have doubt in any one of the questions, please speak out. Okay, don't write anything in the chat. I'm moving away from the laptop, and if you send anything, I will get those chat in the laptop. Okay, but I have my phone where I have logged in. Please speak if you need any help or if you want any clarification in any of the questions. Okay, please keep going, write the answers.
Fahad, I have received your answer. I think you have sent the whole thing in one page, right? Yes. So I had a doubt in question number 2, and a similar question was in my exam. So can I ask after the class? After the class. It will just take 2 minutes, I think. अच्छा ठीक है, ये आपको नहीं आ रहा था? ऐसा ही क्वेश्चन था, शायद ये भी गलती है जो मैंने करा है. How many electrons in an atom may have the following quantum numbers? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है. Aisha, I have received yours. Okay. Where is Aisha? Can I leave? Ah, you can leave. You can leave. I said that. You can leave. Thank you. Sir, Arsen would mind, did you receive it? Sorry, what? Sir, Arsen did the downstairs. Sir, can I leave? Yes, Fatima, I have received yours. You can leave. Okay. Okay. आवाज नहीं आ रही क्या मेरी ठीक से?
Sir, may I leave? Yes, Devangi, I have received yours also. Thank you. Thank you, sir. Abdullah, the time is up. Please send the answers. Yes, Abdullah, I have received yours also. Thank you very much. If you want, you can leave the class, okay? Okay, sir. Thank you. So should I ask now? Yeah. Actually, my mic was off actually. हम आपको बता ही रहे थे, ठीक है? जैसे ये सवाल है, ठीक है? How many electrons in an atom may have the following quantum number? तो इसका मतलब ये है कि इस स्पेसिफिक क्वांटम नंबर से कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, है ना? ठीक है? स्पेसिफिक इस स्पेसिफिक क्वांटम नंबर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो 4s में अगर आपके पास ये देखिए n is equal to 4 है, राइट? सो व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n is equal to 4? कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं एक शेल में? क्या फॉर्मूला है 2n बताइए? हाँ 2n स्क्वायर है, ठीक है? 2n स्क्वायर यानी कितना होगा? 2 into 16 दैट इज इक्वल टू 32, जी। ठीक है? ये 32 वाले जो हैं ये सारे के सारे किसी न किसी ऑर्बिटल में होंगे, या तो s में इसका होंगे, हाफ होगा। इसमें p, हाँ इसका हाफ होगा, बस सही है। बट अगर मैं लॉजिक दूसरा लगाऊं हाँ बताओ। कि अगर n की वैल्यू 4 है तो उसमें n की कौन वैल्यू कौन 4 है, से cells हो सकते हैं? सब शेल्स हो सकते हैं, ठीक है?
n की वैल्यू 4 है, सबशेल कौन कौन सा होगा? 4s होगा, 4s 4p एंड 4d। 4p होगा, 4d होगा, ठीक है। s में आपके पास बनाइए आप, नहीं दूसरी बात, एक सेकंड, सॉरी हाँ एक सेकंड, 4n² will have 32, 4f भी तो होगा भाई, 4f भी तो होगा, जी 4f है ना? यस। कितने हो जाएंगे अब ये? 2, 6, 10 और 14, भाई 32 हो गया, अच्छा, है ना? और जो मैंने आपको पेपर भेजा था हाँ उसमें भी है उसमें कुछ, क्वेश्चन नंबर 20। एक सेकंड, 20 का बी पार्ट। 20 का बी पार्ट, एक second। अरे कहाँ है 20? सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन। 17, अच्छा सेक्शन सी, ठीक है हाँ। इसमें द बी पार्ट। मैक्सिमम नंबर n plus l value is equal to 5, ठीक है। The maximum number of electron which can be filled in all the orbitals having n plus l value is equal to 5, n plus l is equal to 5, तो ये कहाँ कहाँ पे हो सकता है? ये 4p में हो सकता है, और 5s से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 5s में हो सकता है, ये 4p में हो सकता है, और 3d। 3d में हो सकता है, और हो सकता है, नहीं। और कोई चांस नहीं ना कहीं पे? नहीं। हम्म, अब मुझे पूछना मैक्सिमम था नंबर, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के 3 तरीके हैं मेरे पास। एक की 2n², एक 2 टाइम्स 2l+1, हाँ और एक ये जो मैंने पिछले में लॉजिक लगाया था नॉर्मल से। हाँ, अब इस टाइप के क्वेश्चन में कौन सा तरीका यूज कर रहा है? देखिए इस यहाँ पे तो आपको सवाल देखना पड़ेगा ना। सवाल में उन्होंने पूछा द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कैन बी फिल्ड इन ऑल द ऑर्बिटल्स हैविंग n plus l वैल्यू इज इक्वल टू 5। यहाँ पे ऑर्बिटल के बारे में पूछा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी फिल्ड, इस इन सब में से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फिल किया जा सकता है? अब ये देखिए पर्टिकुलर आपके पास एक सबशेल, एक ऑर्बिटल आ गया ना 4p 3d, इसमें बताइए सबसे ज्यादा कहाँ पे फिल किया जा सकता है? 5s में, 4p में, या 3d में? 3d। तो बस हमको लगता है यही आंसर होना चाहिए, है ना? आप क्या करके आए हैं? क्वेश्चन तो है ना कि टब में कितना मैक्सिमम वैल्यू है, सबका देना है। 5s में कितना है, 4b में कितना है, 3d में कितना अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, तो फिर इन सबको ऐड कर देना पड़ेगा जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना, आप ये कहना चाह रहे हैं? है। हाँ, पर इसमें अब मैंने लिखा तो यही है कि 5s में 2 होंगे, 4p में 6 होंगे, हम्म 3d में 3 होंगे। लेकिन हम्म अगर मैं उसमें 2n² लगाऊं तो गलत क्यों होगा? हम्म, क्योंकि 2n² क्या बोलता है? 2n² में आपको क्या है रिक्वायरमेंट, क्या इनपुट ओ क्या ओ होना ओ चाहिए 2n²? ओ ओ ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे वो ठीक है ना, ऑर्बिटल है। है ना, इसमें स्पेसिफाई कर दिया ना कि कहाँ पे आपको देखना है ना? हाँ जी। ठीक है, वहां पे अगर जनरलाइज रहता कि आपको n की वैल्यू अगर सिर्फ दी रहती, इनपुट आपका अगर सिर्फ n है, तो वहां पे आप देखते कि क्या बोलते हैं, हम n की वैल्यू डालते 2n² वाला मेथड लगा देते, ठीक है। ठीक है, और अगले में फिर वो करेंगे। अगले में, हाँ, अगले की नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स नंबर प्रेजेंट ऑफ इन थर्ड स्पेल। ऑर्बिटल्स, हाँ, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होता है तुम्हारा n², है ना? बस n² अब कर दी हो जाएगा।
ठीक ठीक है, आपके पास ये थर्ड शेल है, थर्ड शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 9 होते हैं। आप अगर वैसे भी देखना चाहें तो आपके पास 3s होगा, 3p होगा और 3d होगा। ठीक है, तो इसमें होता है एक ऑर्बिटल, इसमें होते हैं 3 ऑर्बिटल, इसमें होते हैं 5 ऑर्बिटल, जी जी है ना। तो 5 4 9 हो जाएगा, 5 3 8 9। ओके ठीक है, ठीक ठीक वो जो ये असल में देखिए मेथड जो फॉर्मूला है ना, 2n² हो गया या फिर n² हो गया, तो ये सब ऑब्जर्वेशंस है बस, है ना। आपको मेन चीज तो ये है ना। अब इसके बाद हम लोगों ने इनमें एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप देखा। अगर हम इन सबको देख रहे हैं तो ये 9 हो रहा है, एंड हियर वी हैव द n इज इक्वल टू 3। इसके बीच में रिलेशन क्या है, दैट 3² इज इक्वल टू 9, है ना। तो मैथमेटिकल रिलेशंस दीज आर नॉट व्हाट हम बोले, क्या हम बोले, these are not the end, these are just a means to like conclude something quickly। आपको ये नहीं करना पड़ेगा, 3s 3p सब नहीं देखना पड़ेगा। जैसे आपसे मान लीजिए पूछ लिया कि 6th शेल है आपके पास, अगर 7th शेल है आपके पास अगर, है ना, तो उस टाइम तक तो हमको नहीं पता ना वैल्यू की कौन कौन से सबशेल्स होने वाले हैं, तो वहां के लिए आपके पास ये मेथड आसान होगा कि आप 2n² कर लें। ठीक है, वैसे और कोई इस तरह का सवाल था जिसमें आपको दिक्कत हो रही थी? क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट एमसीक्यू जो है, तो आपने ना प्रॉपरली भेजा भी नहीं है, इधर उधर है सारे सवाल। एक सेकंड, वो एंड में है, 3 थर्ड हाँ, लास्ट पेज। इसमें क्या हुआ दिक्कत तुमको? इसमें आंसर तो आ गया, लेकिन एक बार आप इसका वो लिखिए फॉर्मूला, फिर पूछूंगा कुछ। ठीक है, what is the amount of water produced when 8 gram of hydrogen and oxygen? बैलेंस करेंगे 2, बैलेंस करेंगे 2। ठीक है जी ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, 8 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन वी हैव। एंड अगर ऑक्सीजन की बात हम देखें तो ऑक्सीजन कितना हमारे पास, 32। 32 डिवाइड बाई 16 कितना, 16। 32 30। 32 अच्छा इज इक्वल हाँ, टू ओके 1। ठीक ओके है, ओके जी जी ठीक है, 1 मोल हो जाएगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, ये कितना हमारे पास है, दिस इज हाउ मच, जी वेट अ सेकंड, 4 मोल है। सो 1 mole of O2 requires 2 mole of H2, है ना। जी And we have H2 more than needed, सही है। जी 4 मोल है हमारे पास, 2 मोल चाहिए था, है ना। दैट मीन्स O2 is limiting reagent। हम्म। ठीक है, O2 limiting reagent है। अच्छा, 1 mole of O2 makes how many moles of H2O? 2 तो 2। तो 1 mole 2 moles हो जाएगा। अच्छा इसमें ना, इसमें मैंने 16 कर दिया था, तो हाँ फिर तो मेरे वो को अगर, लगा, तब भी आंसर सही आ गया, मतलब मैंने थोड़ा अलग लॉजिक लगाया फिर। हाँ वो आपको कोई ऑप्शन सही नहीं मिले होंगे 2 के अलावा। नहीं, मैंने मैंने उन मासेस को ऐड करके फिर हाँ वो हाइड्रोजन के भी, साथ कंपेयर करा, तो हाँ वो, लेकिन लॉ ऑफ फिर भी, कंजर्वेशन ऑफ मास। आप ये देखिए ना, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट आपका क्या आता, आपका इसमें 2 लिमिटिंग रीजन मोल। होता नहीं ना, दोनों फुली रिएक्ट करते। नहीं, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे नहीं होता ही। कैसे होता है? ऑक्सीजन के 2 मोल आते हैं। अच्छा, मतलब आप अगर 16 लेते तो ना, जी जी नहीं नहीं, हम बोल रहे हैं मतलब इवन अगर आप मास के थ्रू करते तब भी लिमिटिंग रिएजेंट होता ही। तो हाँ, तो फिर मैंने आपने वही मतलब, मतलब मैंने लेकिन कुछ भी तुम, करके आंसर कर दिया था। ठीक है हाँ, आंसर कर दिया। और कुछ इस तरह से? था तो बहुत, लेकिन वो हो गया था बाद में, चेक कर लिया था। ठीक है हो गया ठीक सारा, है जी यही था मेनली ना। ठीक है। जी, फिर तो कैलकुलेशन है वो तो हम्म। देखा। पेपर आप मतलब कितना देर में कंप्लीट हुआ आपका पेपर? पेपर पता नहीं, हाँ, याद नहीं मुझे, टाइम नहीं मतलब लगा। आई थिंक लाइक तो पहले 15 कम, मिनट पहले। 15 मिनट पहले हो चुका था। जी हाँ तब तो ठीक है। और आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि केमिस्ट्री में ना, मतलब चाहे वो, आप ये भी देखिए जो 2 मार्क्स के भी क्वेश्चंस है ना, जी ठीक है,
तो इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 स्टेप रहेगा, ठीक है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन जनरली अगर आप देखिएगा तो उसमें 3 चीज निकालने के लिए दिया रहेगा। 2 मार्क्स अगर न्यूमेरिकल है तो उसमें 2 स्टेप करना रहेगा आपको, ठीक है। 2 चीज ये फाइंड कर दे कीजिए, उसके बाद फिर आपको दूसरी चीज मिलेगी, ठीक है। और मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन अगर आप देखिएगा केमिस्ट्री में जो रहेगा ना, सारे के सारे आप इसको बोल सकते हैं सारे के सारे 1 मार्क्स क्वेश्चन रहते हैं। अब ये देखिए, जैसे 2 मार्क्स का आपका सेक्शन 2 में स्टार्ट हुआ है ना, इसमें तो और ही ज्यादा बेकार हो गया आपका। सेक्शन 2 में 20th नंबर क्वेश्चन तो देखिए, तो उसमें है आपके पास ए पार्ट, यानी कि 3 सवाल है उसमें मेनली, बेसिकली, राइट। जी ए बी, बी में 2 पार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 2 देखिए, उसमें भी आपको 2 चीज निकालनी है, ठीक है। जी देन कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ 1% स्पीड ऑफ लाइट। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, ये 1% स्पीकर क्या होगा, उसके बाद ही आप आंसर निकाल सकते हैं, है ना, जी करेक्ट। फिर उसका तीसरा नंबर सवाल देखिए, तो उसमें 3 आपको 3 के आंसर निकालने हैं, है ना, ठीक जी है। उसके बाद आप देखिए द कॉस्ट ऑफ टेबल सॉल्ट इन केस शुगर दिस मच, कैलकुलेट द कॉस्ट पर मोल, कैलकुलेट देयर कॉस्ट पर मोल। यहाँ पे आप 1.5 मार्क का सवाल बोला जा सकता है, नहीं फिर भी आपके पास मतलब एक करके ही हो जाएगा ये। देन व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलर aqueous solution at डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट। फिर तीसरा सवाल देखिएगा तो 1 2 3 सवाल है उसमें, है ना। सो बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि केमिस्ट्री का आप जब रिवीजन भी कीजिए या फिर आप मतलब नोट्स लिख रहे हैं, शॉर्ट नोट्स लिख रहे हैं, तो उस टाइम दिमाग में ये रखिए कि आपको इसको ऐसे लिखना जैसे ये 1 मार्क्स का सवाल है, ठीक है। रीजन वगैरह भी अगर रहेगा ना, तो उन सब चीजों को भी आप ऐसे ही लिखिएगा, ये मान के कि 1 मार्क्स का सवाल आने वाला है इसका, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जैसे एक सवाल हमने आज जो दिया था आपको ना, ये वाला, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस शेल ऑफ कॉपर इज 3d10 and 4s1 and not 3d9 and 4s2, हाउ इज दिस कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेन। तो इसमें बहुत लंबा आंसर भी लिखा जा सकता है, लेकिन शायद आपको याद हो हमने ये बताया था कि अगर इस तरह से सवाल है कि ये कॉन्फ़िगरेशन क्यों होता है, ये क्यों नहीं होता, तो उसमें आप लिखिएगा क्योंकि ये हाफ फील्ड फुली फील्ड वाला कंसेप्ट है, फुली फील्ड होता है तो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। मैंने तो ठीक, वो भी लिख दिया, एक्सचेंज एनर्जी हाँ हाँ, वही हम बोल रहे थे। उसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाए कि फुली फील्ड और हाफ फील्ड क्यों ज्यादा स्टेबल होता है, तब आप फिर उस एस्टिमेट को एक्सटेंड करते हैं कि इसलिए ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, ठीक। है ना। इन सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ, टाइम रहे तो ऑब्वियसली आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। केमिस्ट्री एक ऐसा वर्सेटाइल सब्जेक्ट है ना जिसमें आपके पास तीनों चीज रहती हैं, तीनों नहीं सॉरी दोनों चीज रहती हैं। आपको मतलब कुछ चीजें ऐसे होंगी जो सिर्फ याद करके आप लिख लीजिए, थ्योरी एंड न्यूमेरिकल,